minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, अब अब PSP open 20 सेकंड की दूरी पर minus प्रमोशन 20 से seconds, सर्वप्रथम ignition आरंभ होते हैं 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds, D3 tracking T1 tracking off normal स्थापन LVM T4 tracking मीडिया 1 मिशन का Standing in beautiful sight of the twin S200 boosters burning, saluted against the night sky. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ S200 stage performance normal यहाँ हम इसके कंपन महसूस कर रहे हैं। Searing the night sky, the LVM3 M2 mission moves forward. 25 meters Sharon is in main auto boosters, each carrying 205 tons of Shato is in main auto plus 1 minute, action time 126.6 seconds. They develop a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। first stage performance normal इसका प्रज्वलन काल करीब 130 सेकंड का होगा। S200 के प्रज्वलन काल समाप्त होने से पहले ही L110 जो कि तरल नजम पर आधारित चरण है, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 stage ignited Now we have a confirmation about the ignition of the whole L110 stage. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी घोषणा की तरल नोदक L110 200 stages are separated और S200 स्टेज के बूस्टर्स पृथक कर दिए गए हैं। The twin S200 boosters have been separated from the ongoing launch vehicle. L110 core stage currently thrusting.